So today we have to start with the new chapter, that is the human eye and the colorful world, correct? Yes, yes, Okay, yes. The human eye and the colorful world. Okay. अब इस chapter में I hope you know कि what we are going to study. सबसे yes, पहले miss. तो we'll study the a kind of introduction for your eye structure कि eye structure किस तरीके से work करता है. Mainly eye structure में we'll study about the lens of the eye, right? Okay. So let's start. So, as the first paragraph is saying, you have studied in the previous chapter about refraction of light. Refraction of light by the lenses. Lenses से क्या होता था? There was bending of light cause होती थी. Either light contract करेगी या फिर light expand करेगी. Right? So, we've also studied the nature, position and relative size of the image formed by the lenses. हमने सारी image formations भी पढ़ी हैं in the previous chapter. What is the nature? Is the image virtual? Is the image real? Position कहाँ पर image position कहाँ पर image form हो रही है? On the same side, on the behind the lens or on the other side of the lens. On the basis of this हम decide भी कर सकते हैं कि किस type का lens है. Correct? Right. So, how can these ideas help us to study the human eye? Why? Because in our human eye also we have a lens, right? We have a Yes, miss. crystalline lens. Yes. That's why यहाँ पे जो हमने लेंस की स्टडी करके आए हैं वो काफी हद तक हमको इस चैप्टर को समझने में हेल्प करेगी. Okay? Yes, ma'am. So they Yeah. are saying that the human eye uses light, enables us to see object around us. अब इसका मतलब क्या है? So I was saying that the human eye uses light and enables us to see the objects around us. अब उससे क्या होता है? Like for example, you are seeing a table in front of you, you're seeing a chair in front of you, anything, the walls around you. So what is happening if there is a light source? Let's say there is this bulb in front of you and it is the source of light in that particular room. And this is the chair. तो यहाँ से light reflect होगी and then it will enter your eyes, because of which you are able to see things around you. ठीक है. Yes, miss. इसीलिए when Yeah. we are in dark room जहां पर कोई भी सोर्स नहीं है लाइट की तो वहां पर क्या होगा? इन दैट केस कोई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा ही नहीं, जिसकी Hmm. वजह से हमें आसपास की चीजें नहीं दिखेंगी. सो फॉर द विजिबिलिटी, फॉर टू सी थिंग्स वी नीड लाइट. Okay. It has a lens in the structure, which we'll see in the diagram when we'll study that. What is the function of the lens in the human eye? How do the lens used in the spectacles correct defects of the vision? Let us correct these questions. Let us consider these questions in this chapter. We have learned in the previous chapter about the light and some Yeah. of its properties. That light reflect करती है, refract भी कर सकती है. Its phenomena, like it is a wave nature also, it is a particle Ah. nature also, right? Yes, ma'am. We shall Ah. also discuss about rainbow formations, splitting of white light into blue colors of the sky. So different for properties of light को देखेंगे. Rainbow formation किस property को explain करता है? Dispersion. Very good. ऐसे ही splitting of light again, it is also a kind of dispersion of light. Yes, miss. Okay. So यहाँ पे the topic here we have is the human eye. So human eye के जो main part होते हैं that will be your cornea. The human eye is one of the most valuable and very sensitive sense organ. हमारे पास 5 sense organs होते हैं basically. We have skin, we have Hmm. eyes, we have ears, we have tongue for our taste, Yes, right? and And nose. nose for the smell, olfactory. Smell. So the human eye is one of the most valuable and sensitive sense organ. It enables us to see the wonderful world around us and the colors. It has the ability to differentiate between the colors. There are many animals who see the world black and white, right? But हम आज भी world को differentiate कर सकते हैं. Red color कौन सा है, dark red color कौन सा है. हम colors में भी एक type के color में ही उसको differentiate भी कर सकते हैं. So we have that kind of ability.
Yes, We can miss. Yeah. identify object to some extent by their smell, taste, sound they make by or by touch. लेकिन एक जो 100% आइडेंटिफिकेशन होती है दैट इज बाय द आईज ओनली. टेस्ट से हम पहचान सकते हैं ये वाला फ्रूट हो सकता है बट देर आर फ्रूट्स विच सम काइंड ऑफ टेस्ट सेम, राइट? या Yes, किसी भी yes. दो चीज की स्मेल सेम हो सकती है. सो योर Hmm. ब्रेन कैन बी कंफ्यूजिंग एट दैट पर्टिकुलर टाइम, लेकिन आप देख कर पता लगा सकते हो कि हाँ ये ए है और ये बी है. Hmm. Thus, all of the sense organs, the human eye is the most significant one as it enables us to see the beautiful and the colorful world around us. The human eye is the camera. जैसे हमारा कैमरा वर्क करता है वैसे ही इसमें भी क्या होता है, its lens system forms an image on a light sensitive skin that is known as retina. तो जो मेन पार्ट होते हैं ह्यूमन आई के that we'll Hmm. study is cornea, iris, pupil, ciliary Hmm. muscles, eye lens, retina and optic nerve. अगर हम यहाँ पर देखें in this diagram तो सबसे पहले द आउटर मोस्ट लेयर जो हमारे आई की है दिस वन इज योर कॉर्निया, राइट? दिस इज द आउटर मोस्ट इज द कॉर्निया. अब कॉर्निया के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव इज अगेन अ लेयर. अब ये जो लेयर होती है इसके बीच में देयर इज स्पेस, Yeah. ठीक है? यहाँ Yeah. पर भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है. दिस इज ऑल्सो अ फ्लूइड, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द आईज. लेकिन ये जो कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर और लेंस के बीच में और आइरिस के बीच में देयर इज अ फ्लूइड दैट्स नेम इज एक्वस ह्यूमर. सो outermost layer is cornea. Then Yeah. cornea के बाद this region is filled with fluid that is known as Fluid. aqueous Aqueous humor. humor. करेक्ट. एंड देन वी हैव दीज मसल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, आइरिस. ये जो कलर ऑफ द आई, जो कलर ऑफ द आई जिसकी वजह से विजिबल होता है, दीज आर योर हाँ. आइरिस. ठीक है. Okay. अब ये जो Yeah. ब्लैंक रीजन है यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. दिस इज योर प्यूपिल रीजन. ये एक्चुअली ऐसा लगता है कि कोई ऑर्गन है. इट्स नॉट एन ऑर्गन. अगर फॉर सपोज मैं एक नीडल लेती हूँ और डायरेक्टली अंदर की तरफ जाने की कोशिश करती हूँ, आई कैन एक्चुअली गो इनसाइड द आईज विदाउट एनी Okay. हिंड्रेंस. सो Oh, दैट ब्लैक yes, रीजन miss. इज प्यूपिल. और ये सभी का ब्लैक होता है. जैसे हर किसी की आईज में ये जो सर्कल है दिस रिप्रेजेंट्स Hmm. द प्यूपिल, जहां से Hmm. लाइट एंटर करती है इनसाइड द आई. ओके. So cornea, then iris muscles, cornea और iris muscles के बीच में we have fluid that is known as aqueous humor. And now coming inside the eyes, अब यहाँ पे हमारे पास है लेंस जिसकी वजह से आईज में क्या होती है, इमेज Refraction. फॉर्मेशन होती है, राइट? Hmm. Hmm. अब ये जो Yeah. लेंस है दिस इज कनेक्टेड बाय द मसल्स विच आर नोन एज Ciliary ciliary muscles. muscles. Okay, दोनों साइड से it is Yeah. connected to the muscles known as ciliary muscles. Now, inside the eye we also have a fluid which is called vitreous humor या vitreous fluid. अब ये जो सीलियरी मसल्स हैं और ये सीलियरी मसल्स हैं दीज आर आल्सो कनेक्टेड टू द ऑप्टिक नर्व्स. और यहाँ पर भी ये जो नर्व्स जा रही हैं दिस इज योर ऑप्टिक नर्व. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, फॉर सपोज यहाँ से एक लाइट आई फॉर द इमेज फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द लेंस, ये इमेज कहाँ फॉर्म होगी, रेटिना पर. Retina. Hmm. ठीक है. अब Hmm. रेटिना में क्या है, रेटिना में बहुत सारे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट हैं. दीज सेंसरी सेल्स विल सेंस द इमेज एंड देन ये जो इमेज है ये सिग्नल कहाँ जा रहा है, सीधा ब्रेन तक. ठीक Retina. है. Yeah. तो यहां से Yeah. ब्रेन ने सेंस किया ओके दिस इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एंड फिर वहां से क्या होगा, इमेज ब्रेन बनाएगा एंड देन वी आर एबल टू सी अच्छा सामने मेरे ये है. अब यहाँ पे Yes, miss. एक चीज ऐसी होती है अगर इमेज बनेगी तो हमको नहीं दिखाई देगा. फॉर सपोज अगर इमेज इस रीजन पर बनती है तो यहाँ पर कोई भी हमको रेटिना नहीं दिख रहा है, नहीं. राइट? दिस रीजन हाँ. इज नोन एज ब्लाइंड स्पॉट. Spot. दिस रीजन इज कॉल्ड ब्लाइंड Blind स्पॉट. spot. ठीक है. सो लेंस इज कनेक्टेड, दीज आर योर सीलियरी मसल्स. अब ये सीलियरी मसल्स
और लेंस के बीच में जो हल्का सा येलोइश पोर्शन दिखाई दे रहा है, these are known as suspensory ligaments. So the human eye is like a camera. Its lens system forms an image on a light sensitive screen called retina. Light enters the eye through a thin membrane called cornea. It is a transparent bulge in front of the surface of the eyeball. The eyeball is Yeah. approximately, पूरा sphere नहीं होता है, approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeter. Centimeter. Most of the refraction of the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. जो जितना भी रिफ्रैक्शन होना होता है, यहाँ पर लिक्विड है, फ्लूइड प्रेजेंट है, तो वो काफी हद तक जो है आउटसाइड द आई ही हो जाता है. So most of the refraction of the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. रिफ्रैक्शन मतलब ये नहीं कि आईज में एंटर नहीं होगा, लेकिन जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो कॉर्निया से ही शुरू हो जाता है, फ्रॉम दिस आउटर सरफेस ओनली. The crystalline Yes, ma'am. lens merely provides the finer adjustments of the focal length required to focus the object at different distances on the retina, on the Retina. basis of which we are able to form the what we can say, the image on the lens, and then we are able to see the world around us. Us. ठीक है. तो Yes. यहीं से Yeah. रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग शुरू हो जाएगी, एंड देन फिर कॉनकेव लेंस का या फिर जो सॉरी कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे आईज में है उसका काम क्या होता है, टू मेक इट अ फाइनर इमेज फर्स्ट थिंग, एंड ऑल्सो इन सच अ वे दैट इट फॉर्म्स द इमेज एट द रेटिना एट द राइट पोजीशन. ठीक है. We find a structure called iris behind the cornea. Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. Pupil. The pupil regulates and controls the amount of light entering inside the eye. अब इसलिए क्यों ऐसा क्यों होता है, because if high amount of light is entering in the eye, Hmm. it might cause damage to the lens as well as to the eyes. Okay, that is the Yeah. reason the amount of light should be controlled in the eye region, or we can say in the eyes. अब वो होता कैसे है? You might have seen, अगर observe किया होगा, in the light, ट्राई करना मिरर के सामने, यू स्टैंड एंड हाँ. पहले तो काफी देर तक आंखें बंद रखना या रूम में डार्कनेस रखना, ताकि प्यूपिल अपना ऑटोमेटिकली क्या होगा, छोटा हो जाएगा. अब इसका भी एग्जांपल यू माइट हैव सीन, जब आप एक अंधेरे रूम में एंटर करते हो फॉर Hmm. अराउंड 30 सेकेंड्स, यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी थिंग्स, राइट. Yes. Yes, लेकिन ma'am. फिर हाँ. उसके बाद दिखना शुरू हो जाता है. क्यों? बिकॉज Yes, ma'am. फॉर दैट पर्टिकुलर सेकेंड, फॉर दैट 15 to 20 seconds, योर प्यूपिल वॉज, योर मसल्स वर एडजस्टिंग. अब जब मैं अंधेरे में हूं तो मुझे ज्यादा लाइट चाहिए आईज में या कम लाइट चाहिए? ज्यादा लाइट चाहिए. आईज में मेरे ज्यादा लाइट जानी चाहिए, करेक्ट. इन हाँ. दैट केस माई प्यूपिल शुड एक्सपैंड, या. या. करेक्ट. अब हम्म. एकदम से ही मैं बहुत तेज मतलब धूप में निकल गई या मैं लाइट वाले कमरे में आ गई, तो मेरी आंखें ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट फ्लटरिंग, कि वो एडजस्ट यस. करती है. क्यों? क्योंकि हाँ. अगेन आईज का इतनी ज्यादा जो लाइट है वो आई एक साथ बेयर नहीं कर पाएंगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, मेरा प्यूपिल छोटा छोटा हो. हो जाएगा. यू कैन सी हम्म. इट, अंधेरे कमरे में जाओ सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए, एंड देन फिर शीशे के सामने आके फोन की टॉर्च से अपनी आंख पर टॉर्च लगाना, यू विल सी द एक्सपेंशन ऑफ द प्यूपिल. विजिबल होता यस, है, मिस. विजिबल चेंज आता है. सो हम्म. प्यूपिल ने अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया. अब ये जो एक्सपेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द लाइट, दैट इज ड्यू टू द आइरिस मसल्स. इतना क्लियर हो गया? ओके. हाँ, मैम. So यस. the eye lens forms an inverted real image of the object on retina. जो हमारा रेटिना है उस पर क्या होता है, इन्वर्टेड इमेज बनती है. लेकिन ब्रेन के दिमाग में ब्रेन क्या करता है, जो भी इमेज बन रही है उसको उल्टा मैं कर दूंगा. सो फॉर सपोज, अगर मेरे पास दिस इज द ऑब्जेक्ट,
करेक्ट। Yeah. रेटिना Yeah. पे इमेज फॉर्मेशन होगी लाइक दिस। अब ये मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, ब्रेन फिर से उसको उल्टा कर देगा। See that. Okay. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाँ ब्रेन मैम. वो फ्लिप कर रहा है, वो उसको इन्वर्ट कर रहा है। Yes. ओके, Okay. एंड देन फिर वो उसको मैसेज करेगा कि दिस इज द इमेज दो, मुझको नहीं पता लेकिन मुझे सिग्नल ये भेजना है। आई हैव रिसीव्ड दिस बट आई विल सेंड द सिग्नल दिस। Okay. क्लियर Yes हो ma'am. गया? Understood. हाँ वो मैम. रिसीव कर रहा है सिग्नल ऑफ द इन्वर्टेड इमेज बट इट विल सेंड द करेक्टेड इमेज। ओके, Okay. Yes ma'am. so the eye lens forms an inverted real image. Real image क्यों? Because it is forming on the screen On. of the retina. Yeah. ठीक है, जो स्क्रीन पर फॉर्मेशन होती है, जो लाइट स्क्रीन पर फॉर्म हो सकती है, Hmm. दैट आर द रियल इमेज। So inverted Yes ma'am. real image of the object on the retina. Here our screen is the retina. The retina is a delicate membrane having enormous numbers of light sensitive cells. ये light sensitive cells में main होते हैं rods and cones. Rods and cones depending upon the Cons. numbers, black and white and color पर depend करते हैं। ठीक है, black and white and Okay. color। rods black and white चीजों को ज्यादा दिखाते हैं and cones colors को। Color. Hmm. ठीक है, सो जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, जो रात में शिकार करते हैं, जो रात में घूमते हैं, रात में जागते हैं, दे हैव हाई अमाउंट ऑफ रॉड्स। Rods. और हम एज अ ह्यूमन अंधेरे में अच्छे से नहीं देख पाते बिकॉज वी हैव लेस अमाउंट Cons. ऑफ रॉड्स एंड हाई अमाउंट ऑफ कॉन्स। हम ग्रीन Cons. में भी शेड्स देख सकते हैं, रेड में भी शेड्स देख सकते हैं, ब्लू में भी शेड्स हाँ. देख सकते हैं। वाई? बिकॉज हमारे अंदर कॉन्स ज्यादा हैं, तो हम क्या करते हैं, easily differentiate कर पाएंगे। The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electric signal. Light sensitive cell पे जैसे ही एक image cast होगी, so it will generate the impulse electric signal। मतलब हमारे अब हमारे पास जो image आई रेटिना पर, that was the stimulus। स्टिमुलस के बारे में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में और डिटेल में जानेंगे। यहाँ पर स्टिमुलस Okay. मतलब जो आउटर सराउंडिंग से मुझे सिग्नल मिला है, दैट इज योर स्टिमुलस। Changes. Yes. करेक्ट। Yes. तो जो मुझे आउटर सराउंडिंग से स्टिमुलस मिला, वो रॉड्स पर और कॉन्स पर स्ट्राइक हुआ, उसने एक पर्टिकुलर इमेज बनाई। दैट इमेज फॉर्मेशन से दिस इज माई एलिमिनेशन, और वहां से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ जो क्या किया, ऑप्टिक नर्व के थ्रू मेरे ब्रेन के पास किया। ठीक, Hmm. Hmm. as I told you, these signals are sent to the brain via optic nerve. The brain interprets these signals and finally process the information so that we perceive the objects as they are. Means अब ब्रेन के पास जो इंफॉर्मेशन आई है वो इन्वर्टेड इमेज की आई है। अब ब्रेन उसको प्रोसेस करेगा कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे है, एंड देन उसके बाद उसको इजीली हमको दिख जाता है, हमको विजिबल होता है कि हाँ, दिस इज द Okay. रियल इमेज और दिस इज द रियल थिंग दैट वी आर सीइंग। द ह्यूमन आई, the human eye works on the human eye works on the refraction of light. The human eye works on the refraction of light through a natural convex lens, through a natural convex lens made of transparent made of transparent living material, made of transparent living material, and and enables us enables us to see things around us, and enables us to see things around us. Next line.
The main parts of the human eye are the main parts of the human eye are number one, cornea, number two, iris, number three, pupil, number four, ciliary muscles, ciliary muscles, number four, eye lens, eye lens, number five, retina, and optic nerve, No. and optic nerve. Written? Okay. Now write down. The frontal part of the eye is called cornea. The frontal part of the eye is called cornea. हेडिंग क्या डालूं? Construction of the eye. Construction. The front part of the eye is called cornea. Yes, ma'am. Point. It is made of it is made of a it is made of a transparent substance. It is made of a transparent substance and it is bulging outwards, giving it a convex shape. Giving it a convex shape. The light coming from objects enter the eye through the light coming from the objects enters the eye through cornea. Next heading, iris. Iris is a flat, colored, ring-shaped membrane behind the cornea of the eye. It is also called colored diaphragm. Next line, pupil. There's a hole in the middle of the iris. There's a hole in the middle of the iris which is called pupil of the eye. Full stop. The pupil appears black. The Hmm. pupil appears black because no light is reflected from it. Light is only entering here. There is no reflection of light. Absorb. We can write no absorb. Maximum absorption of light is there. Oh, So the pupil appears black because no light is reflected from it. मतलब आंखों के अंदर से कोई भी लाइट नहीं आती है या फिर आंखें रिफ्लेक्ट नहीं होती है. अब जैसे फॉर सपोज hmm. when we are Hmm. standing in front of the mirror also हम अपनी आंखें देख पाते हैं. So every part of the light is somehow reflecting the light Yeah. from the mirror and then we are able to see. जैसे हम कोई भी इमेज देखते हैं लेकिन जो Hmm. प्यूपिल है प्यूपिल से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही बिकॉज इट इज अ एम्प्टी स्पेस. ये कोई स्क्रीन नहीं है जिससे रिफ्लेक्शन होगा. गेटिंग माई Yeah. पॉइंट. इट्स अ होल. तो खाली जगह से एम्प्टी स्पेस से लाइट रिफ्लेक्ट कैसे करेगी. करेक्ट. Right. तो यहां Yeah. से कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं है. दैट इज द रीजन ये हमको क्या हो रहा है ब्लैक अपीयर हो रहा है जो या तो वहां से कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो या फिर मैक्सिमम अब्सॉर्प्शन हो रहा हो. जितनी ज्यादा चीज ब्लैक होगी उतना ही ज्यादा वहां पे क्या होगा एब्सॉर्प्शन. यू वॉन्ट बी Absorption. एबल Yes. टू सी एनीथिंग. राइट. नेक्स्ट लाइन, eye lens. The eye lens is a convex lens
The eye lens is a convex lens made of a transparent. The eye lens is a convex lens made of a transparent, soft and flexible material like a jelly made of proteins. Next line. Being flexible, the eye lens can change its shape. It can become thin or thick to focus light onto the retina. Next, ciliary muscles. Ciliary muscles. यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी रोल प्ले करते हैं टू होल्ड द लेंस ऑन द पोजीशन. बट सिंस एनसीईआरटी में सस्पेंसरी लिगामेंट्स के बारे में सच कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वी वोंट राइट अबाउट इट. ठीक है. Yes, ma'am. लेकिन Yeah. जो होल्ड करने का काम होता है लेंस को, right, in the particular position, that is of the ligaments, that is suspensory ligaments. Okay. Ciliary muscles change the thickness of the, or we Yes, can ma'am. say, the focal length of the eye lens can be changed. Or we can say that the focal length of the eye lens can be changed. Next, retina. The screen on which the image is formed is called retina. Is called retina. Retina. The retina of an eye is just like the film in a camera. The film in a camera. Next line. The retina is a delicate membrane. The retina is a delicate membrane having a large number of light sensitive cells called called rods and cones, which respond to intensity of light intensity of light and color of objects respectively. Respectively in the sense, rods for the intensity of light and cones Okay. for the color of the object. Yeah. फिर उसके बाद we have blind spot. Write down the heading, blind spot. At the junction of optic nerve and retina in the eye, there are no light sensitive cells due to which no vision is possible at that spot. लाइट सेंसिटिव सेल्स ही नहीं है मीन्स रोड ना रॉड्स है ना कॉन्स है. अगर वहां इमेज फॉर्मेशन होगी भी तो वहां पर सिंस वहां पर हमारे पास डिटेक्ट करने के लिए वो इमेज को डिटेक्ट करने के लिए सिग्नल रिसेप्टर्स ही नहीं है तो वहां पर सिग्नल पास Yeah. ऑन होंगे ही नहीं Hmm. एट दैट स्पॉट. Full stop. This is called blind spot. Next, the space between cornea and the eyelids. The cornea and the eyelids is filled with is filled with a watery liquid called aqueous humor, and the space between eyelids and the space between eyelids and retina is filled with a transparent jelly-like fluid transparent jelly-like fluid called vitreous humor, Yeah. which supports the back of the eye. Which supports the back of the eye. Basically, आंखों को सूखने ना देना. That we say. Dryness, to prevent the dryness in the eyes. अगर आंखें सूखनी शुरू हो जाएंगी तो लेंस सूख जाएगा जिसकी वजह से अगेन
ब्लाइंडनेस वो भी हो सकती है, एक्सट्रैक्ट नहीं कर करेक्ट, हाँ परमानेंट ब्लाइंडनेस भी हो सकती है इफ द लेंस ड्राइज। ओके। या 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 इसीलिए देर इज रिकमेंडेशन दैट इफ द स्टूडेंट और द पीपल नाउ डेज, बिकॉज कंप्यूटर के आगे या फिर लैपटॉप के आगे बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से हमारा हम्म जो आईज को बंद करने का खोलने का टाइम होता था वो बहुत बढ़ गया है, बहुत देर तक हम पल के झपकते ही नहीं है, वी आर कॉन्स्टेंटली या सीइंग ऑन द स्क्रीन, जिसकी वजह से देर इज कॉन्स्टेंट ड्राइनेस इन द आईज. So it is recommended. My doctor told me that after working, maybe after 1 hour or after 2 hours, just go ओके and wash your eyes. तो उससे यस बहुत हेल्प होगी आईज में, अगेन प्रॉब्लम नहीं होंगी, विजन में जो आजकल स्पेक्टिकल्स लग जाते हैं बहुत जल्दी वो भी प्रिवेंट हो सकता है। और ओके जब भी याद आए काम करते हुए, स्क्रीन पर भी काम करते हुए, जस्ट रैपिडली अपनी आईज को ना बहुत जल्दी फ्लिप करना शुरू कर दो, बहुत जल्दी, जस्ट फॉर 10 सेकेंड्स, ऐसे 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 कि अच्छा अब 10 सेकेंड्स हो गए, या फिर मतलब अच्छा 15-20 मिनट हो गए मुझे स्क्रीन देखते हुए, जस्ट फटाफट से फॉर 10 सेकेंड्स आईज को बंद खोल, तो उससे क्या होगा, आईज में जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहेगा। ओके, नाउ damage to or malfunction on any part of the visual system can give lead to a significant loss in the visual functioning, मतलब blindness भी आ सकती है. If any structure involved in the transmission of light, like a cornea, pupil, eye lens, aqueous humor, and vitreous humor, or those responsible for the conversion of light to electrical impulse, that is our light sensitive cells, like लाइट the से retina यस or even the optic nerves that transmit these impulses to the brain, इम्पल्स टू is ब्रेन damaged, this will result in visual impairment. जैसे मूवीज में इम्पेयरमेंट दिखाते हैं कि सामने से अगर माथे पर लग गया तो अगेन ब्लाइंडनेस, इवन इट हैपेंस ऑल्सो, अगर सर पे सामने की तरफ से कोई चीज लग जाती है तो फॉर टेम्परेरी टाइम्स ऑल्सो, कुछ देर के लिए यू आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग, राइट? क्यों? या क्योंकि हो या सकता है ऑप्टिकल नर्व या ऑप्टिक रीजन हमारी आई का डिस्टर्ब हुआ फॉर दैट सम टाइम. It will यस मैम result in the visual impairment. You might have experienced that you are not able to see objects clearly for some time when you enter from bright light to a very dim light. That I told you because of the accommodation. वो जो लेंस के साथ accommodation हो रहा है हमारा, सीलियरी मसल्स एडजस्ट कर रही हैं, लेंस को छोटा कर रही हैं, लेंस को बड़ा कर रही हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज ऑफ विच हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है फॉर फ्यू सेकेंड्स. After some time, या however, you may be able to see things in the dim light room. The pupil of the eye acts like the variable aperture for those size can be varied with the help of the iris. As I told you, जो iris के sorry pupil के size को manage कर रहा है, that is the iris muscles. आइरिस ठीक है? यस So ये या important है. This paragraph is very important. When the light is bright, सो वी वांट कि आंख में लाइट कम जाए, करेक्ट? तो या प्यूपिल को या हमें छोटा करना है. कॉन्ट्रैक्ट्स So the iris contracts, the pupil will allow less light to enter the eye. ठीक है? So iris या muscles are contracting at that particular time. However, in the dim light, the iris expands the pupil to allow more light, ताकि जो pupil है वो क्या हो जाए, रिलैक्स मोड में आ जाए. So in the dim बड़ा light, हो जाए right, the iris expands the pupil to allow more light to enter the eye. Thus, the pupil opens completely to the relaxation of the iris. इतना क्लियर है? सो मैम जब आइरिस कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हम कह सकते हैं कि प्यूपिल डायलेट होगा राइट करेक्ट. एंड जब आइरिस डायलेट और इलेट में क्या अंतर है डायलेशन में साइज इंक्रीज हो रहा है. ओके ओके ठीक है? राइट डाउन द हाँ फंक्शन ऑफ आइरिस एंड प्यूपिल. जिसे ये हमने अपने हार्ट में ही पढ़ा था, वेसो डाइलेटर्स, वेसल्स को डाइलेट मतलब रेडियस बढ़ाने वाला, वेसो डाइलेटर्स. ठीक है? ओके वेसो या डाइलेशन, रेडियस को बढ़ाना. if the light if the amount of light if the amount of light received by the eye received by the eye is small,
as in dark room or during night, as in dark room or during night, the iris expands, the iris expands, the pupil makes the pupil large, makes the pupil large, so that more light may enter the eye, so that more light may enter the eye. Next point, if the amount received by the eye is large, if the amount received by the eye is large during daytime or in a bright light room, as during daytime or in a bright light room, Yeah. the iris contracts the pupil, the iris contracts the pupil, that is makes the pupil small, that is makes the pupil small and reduces the amount of light Entering the eye. entering the eye. eye. So iris के जो muscles होती हैं, they are Hmm. circular muscles. ठीक है? Okay. Iris में Yeah. जो muscles present होती हैं, they are the circular muscles. Okay? So if the pupil is dilating, as I'm saying, as you were saying, मतलब pupil enlarge हो रहा है, Yes. ठीक है? या फिर अगर Hmm. डार्क हो रहा है तो श्रिंकिंग या कंस्ट्रिक्टिंग हो रहा है, Yes, ma'am. करेक्ट? सो ऑन द बेसिस Yeah. ऑफ दैट ये जो मसल्स होती हैं ये अपना एक्शन दिखाती हैं. सो दे आर द सर्कुलर मसल्स व्हिच कंट्रोल्स द entrance of eye or the amount of light that enters the eye. Hmm. ठीक है? By Yeah. dilating or by constricting the pupil. Yes, miss. Okay? जब Yes, वो ma'am. साइज बड़ा हो रहा है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डायलेशन, और जब वो साइज छोटा हो रहा है तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रिक्शन. ऐसे ही वेसल्स में भी होता है. अगर वेसल्स छोटी हो रही है, फॉर सपोज किसी का बीपी लो हो रहा है, तो उस टाइम हमको वेसल्स अपनी वेसल्स का रेडियस छोटा करना होगा, वेसो कंस्ट्रिक्टर्स चाहिए. जब बीपी हाई है तो जो वेसल्स उनका रेडियस बढ़ाना होगा तो वेसो डायलेटर्स. ठीक है? Okay. ठीक है? Yes, ma'am. So in your next class we'll start with power of accommodation. Okay? So in our next class, we'll start with power of accommodation, and I hope you like this channel. I hope you like this lecture. Please do subscribe and hit the bell icon for the regular updates of the chapter or the lecture that is being uploaded. Okay, have a nice day. Thank you.